and gentlemen, please welcome our chief guest and guest of honors for this August gathering. Sir, with your due permission, shall we start the program? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरत है अगर नज़्म तो उन्वान है औरत, हर जात की दरअसल निगहबान है औरत। मरियम कहीं दुर्गा कहीं सीता, ताकत कहीं सीरत तो कहीं शान है औरत। ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल, अगर प्यार से समझो तो बड़ी आसान है औरत। माँ कह के तेरे जीवन में जन्नत दी खुदा ने, तू जान ले किस दर्जा तेरा मान है औरत। हर शख्स के हिस्से में ये ले आती है रौनक, पर अपने ही अंदर बड़ी वीरान है औरत। हर दौर ने इसको कभी बेचा कभी लूटा, अल्लाह मेरे कितनी परेशान है औरत। देती है ज़माने को यही सूरमा, ताकत से मगर अपनी अनजान है औरत। Honorable Chief Guest, Professor Dr. Mujibuddin Sehrai Memon, Vice Chancellor, Sindh Madressatul Islam University. Our very esteemed guest of honors, Ms. Tara Uzra Dawood and Ms. Nisha Rao, respected Principal's Officer, Head of Department, Faculty and Staff members, and my dear fellows. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. I, Fakih Ali Khan, student of Department of Media and Communications Studies, welcome you all on the behalf of Directorate of Student Affairs and Counseling. Welcome you all to the beautiful occasion where we all have gathered to commemorate the celebration of International Women's Day 2021. Jazakallah. Ladies and gentlemen, the national anthem of Pakistan shall now be played. May I invite on stage Honorable Registrar, Sindh Madressatul Islam, Mr. Ghulam Mustafa Sheikh, to extend the welcome note, please. We have been hearing from the student life that there is behind every successful man, there is a woman. I cannot stop today to express my feelings. Today is my first day as joining as a registrar, and there might be a link that I'm here. On behalf of SMIU, its officers, its academia, its students, I warmly welcome to the 2021 commemoration of International Women's Day at Sindh Madressatul Islam University. Today it's an honor for me to welcome you for this important occasion. It's a day that people around the world dedicated to the women and their lives, thus celebrating the importance and significance of the women in every person's life. I will not take so much time. There are very much important and honorable guests here to speak with you and celebrate this day. God bless you. All of us know we celebrate International Women's Day on 8 March, but few of us know the background of designated a special day to this celebration. We shall now be screening a documentary sharing the history of International Women's Day, followed by a wonderful song paying tribute to women's featured by ISPR. Every year on the 8th of March, International Women's Day is celebrated across the globe.
It's a day to recognise female achievement and a call to action, encouraging everyone to stand up for women's rights and gender equality. Gender equality means no matter your gender, you're granted the same rights, privileges and access to opportunities as everyone else. You may be thinking, why is this day so important? Throughout history, women had to fight for the freedom and rights we enjoy today. 150 years ago, women could vote, stand in parliament, receive proper medical attention, own property, access fair legal support, get paid the same as men, visit the same public areas as men, get a proper education. The list goes on. 150 years ago, people lived in a very different world to what we know now. So how did things change? Someone didn't snap their fingers and then bam, women had all the rights. Change occurred gradually through the tireless efforts of brave women and men fighting together for what is right. Let's rewind. In the late 19th century, the fight for women's suffrage began gaining momentum. Suffrage means the right to vote, and at this time, only men could do so. This meant that all the political decisions were decided by men, including those that only affected women. As time passed, some women grew increasingly frustrated by the lack of progress and failed attempts to achieve suffrage. One of these women was Emily Pankhurst, who responded by forming the Women's Social and Political Union in 1903, which encouraged a stronger kind of activism. This led to years of protests, rallies and strikes, with women being arrested, jailed, injured, and some even losing their lives in the fight for suffrage. When the First World War was declared in 1914, suffragettes shifted their campaign to encourage women's involvement in the war effort. The devastation of war brought the nation together in support of one another, and attitudes began to change. Women took on responsibilities and jobs that they were previously excluded from, like working as mechanics and drivers. In 1918, the Representation of the People Bill was passed, giving women the right to vote. However, it was only some women of a certain age and circumstance. It wasn't until 1928 that all women over 21 were finally allowed to vote. The right to vote is instrumental in creating a society that is fair and just. Imagine if all the UK were one gigantic football team. Half of the team can play exactly as they are, while the other is blindfolded. The team probably isn't going to do so great. The same goes for a society. If everyone has the same rights and freedoms, a society can grow and develop in a way that benefits everyone. Once women were able to vote, the ball began rolling on other rights, like political representation, access to greater opportunities, fair pay, and working rights. As you can see, change takes time. It wasn't until 1979 that Britain had its first female Prime Minister, which was 76 years after Emily Pankhurst first established the Women's Social and Political Union. So what does gender equality look like today? We're fortunate to live in a time and place where incredible opportunities are in abundance. Everyone can get an education, access healthcare, get a job and speak their minds. However, we still have some work to do before we reach equality for all. One way that gender inequality plays out in our everyday life is through stereotypes. A stereotype is a generalised opinion of a person or group of people. Ever heard someone say something like, "You throw like a girl," or "boys don't cry"? These kinds of phrases exist because of centuries of restrictive ideas about gender that really aren't true or fair. People are way too unique and complex to fit neatly in a box. Girls and boys can be athletic, fast and strong. And of course, everyone cries. It's normal and healthy to express your feelings and to be vulnerable.
Stereotypes can be really damaging and can prevent you from being yourself and reaching your potential. Today, women are still the minority in Parliament. Leadership roles in career fields like science and engineering, as well as making less money than men on average. So, this International Women's Day, think about what you could do to help in the fight for equality. Everyone benefits when we are all treated equally. Why not celebrate the amazing achievements of women you admire, especially now you know just what it took to get there? March 8th marks International Women's Day, a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. It has a clear purpose to promote unity, celebration, reflection, advocacy, and action. Of course, we need more than just one day to celebrate all the women's action. Of course, we need more than just one day to celebrate all that women bring to the world. But the focus provided by International Women's Day means we bring to the world. But the focus provided by International Women's Day means we can draw attention to the inequalities faced by trans people also. We can use this day to not only acknowledge their many achievements, but to galvanize the momentum needed to grow more inclusive society. We are honored to have with us today the first transgender lawyer of Pakistan, none other than Ms. Nisha Rao. In this segment titled SMIU Talks Meri Kahani Meri Zawani, I would like to invite on stage moderator of session Abdul Bari, former student of the Department of Media and Communication Studies. May I now invite our guest of honor, Ms. Nisha Rao. कहते हैं कि रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो, मंजिलें कितनी ही दुश्वार क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, जुस्तजू है कुछ करने की, तो वो सारे रास्ते जो हैं वो आसान हो जाते हैं. आप अपनी मंजिल सर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से. और आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और शायद इस इंस्टीट्यूशन के लिए भी बड़े ऑनर की बात होगी कि जिस इंक्लूसिव सोसाइटी की हम बात करते हैं, आज उसका एक सिंबल हमें देखने को मिल रहा है. तो मैडम निशा राव हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर हैं. मैं आपको बताऊं कि लाहौर से कराची तक का इन्होंने सफ़र किया, रस्तों पे खड़े होकर बैगिंग करके अपने तालीमी अखराजात को जो है वो पूरा किया और आज इस मनसब पर हैं. ये सिंध स्टेटस ऑफ कमीशन फॉर वुमेन की मेंबर भी हैं, उसके साथ साथ अपनी एक NGO भी रन कर रही हैं. तो मैम, ऑन बिहाफ ऑफ SMIU मैं आपको इस जिन्ना साहब की मादर इल्मी में वेलकम करता हूँ. थैंक यू. और इससे कबल कि मैं बाकायदा अपने पैनल का आगाज़ कर सकूँ, मेरे पास एक तहरीर मौजूद है और मज़हमती तहरीर है थोड़ी सी, लेकिन माशरे की अक्कास है, तो अगर कहीं पे तल्ख हो तो इंतहाई माजरत. ये तहरीर उन तमाम तर ख्वाजा सराओं के नाम जो अपनी तमाम तर जहदों और कोशिशों के बावजूद आज तक प्यासे खड़े हैं कि वो चांद पर सब्ज़ लाली परचम लहरा सकेंगे या नहीं, वो तरक्की याफ्ता कौम बन सकेंगे या नहीं. लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आपको और मुझको एक महज़िब कौम बनने में महज कुछ ही दिन लगेंगे. एक ऐसी कौम जो नापाक साए को भी अपने दर पर पड़ने ना दे, इनके चलने थरकने की आवाज़ों पर आवाज़ें कसती रहे. जिस्म क्या, रूह पर भी अस्मत दरी के निशानों को पेवस्त करे और बारहा करे, ऐसे निशान कि जो मिटने से भी ना मिट सके. इनके पैरों की घुंघरू की मस्ती से इस तरह घायल करें कि अपनी आवाज़ें हक को भी बुलंद ना कर सकें. इनको ख्वाजा सिरा ना कहें, आए मिलकर कहें. इनको किन्नर कहें, इनको हिजड़ा कहें. गिरोहों हुजूमों की सूरत मुजक्कर की रालें टपकती रहें और मुअन्नस भी हंसती रहे. गालियों तालियों की सदाओं में जब जस्ते खाकी उठे तो नमाज़े जनाजा पढ़ाने को कोई मौलवी भी मयस्सर ना हो. इस तरह इन ख्वाजा सिराओं को इस तहजीब याफ्ता कौम से मिटाने में
आपको और मुझे महज चंद दिन ही लगेंगे। इंतहाई माजरत अगर थोड़ी सी तल्ख ज़रूर हो निशा, ये सवाल शायद हम सब के जहन में होगा कि ये जो आपका सफ़र है जहाँ से आपने आगाज़ किया है, जहन के गोशों में जो ये जो थॉट्स हैं कि आपने माशरे की उस बाउंड्रीज़ को, उन स्टीरियोटिपिकल सोच को, उसको जो है वो आपने क्रॉस किया। इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से होता है? मैं चाहूँगा कि ये ब्रीफली आप ज़रा बता दें, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे भी बात कर रहे होंगे। ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस सफ़र में? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगी मरियम, वेयर इज़ मरियम, कि इसके लिए क्लैपिंग की जाए कि इसने मेरे लिए यहाँ पर इवेंट रखा। सेकंड, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो अब्बा हैं वो आर्मी में मेजर थे, पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ। अब्बा की 2 शादियाँ थी, तो मैं स्टेप भाई थे। एक ही भाई है मेरा, एक ही सिस्टर है, मैं सबसे छोटी थी। 5th और 6th क्लास में जब मैं पढ़ती थी तो मुझे उस टाइम फ़ील हुआ कि मेरा जेंडर चेंज है, ऐसा मेरे अंदर कुछ है जो मैं दूसरों से बहुत डिफरेंट नज़र आती हूँ। तो उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ। जब मैं 9th और 10th में गई, लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुलिंग करते थे, शर्मीली बोलते थे, कोई रीमा बोलता था। हालांकि मैं बॉयज़ कॉस्ट्यूम में होती थी, मेरे छोटे छोटे बाल होते थे, लेकिन मैं घर पर आकर अपनी सिस्टर, मेरी एक सिस्टर हैं वो MBBS है, मैं उनको बताती थी, अभी वो डॉक्टर हैं, कि मुझे लड़के ऐसे बोलते हैं। वो मुझे बोलती थी तुम ठीक चलो, अच्छे से बोलो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं नमाज़ पढ़ती थी, मस्जिद जाती थी, तहज्जुद पढ़ती थी। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, बल्कि मेरी फैमिली ने सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार किया। जब मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मेरे टेस्ट वगैरह हुए, मेडिकल हुआ, तो मुझे पता चला कि मैं 3rd जेंडर से हूँ। तो मुझे ऐसे डिप्रेशन सा हो गया जैसे एक इंसान का फ्यूचर ही नहीं है उसके पास। मुझे लगा मेरी शादी नहीं होगी, मैं हिजड़ा कल्चर में चली जाऊँगी, नाच गाना ही होगा। और मैंने कभी बुक्स में ये भी नहीं पढ़ा था कि मैं कराची जाकर 3 तलवार, सदर, मेहरान सिग्नल, लकी स्टार सिग्नल्स में यहाँ पर भीख मांगूंगी। ऐसा भी मैंने फ्यूचर में कभी सोचा ही नहीं था। बस ज़िंदगी थी वो गुजारनी थी किसी तरीके से। घर के हालात थोड़े मुझे स्ट्रिक्ट लगे, घर वाले मुझे सुधारने के लिए लगे, मैं डिप्रेस में चली गई। एजुकेशन मैंने छोड़ दी मैट्रिक के बाद। तो मैंने क्या किया, घर से भाग गई। तो मेरे पास कोई प्लान नहीं था, ना मेरे रिश्तेदार थे। मैं घर से भागकर कराची आ गई, ट्रेन में बैठी, घर से अब्बा के पैसे चुरा लिए फ़र्स्ट टाइम, मोबाइल भी अब्बा का चुरा लिया। ये 2008 की बात है। मैं कराची आ गई, लेकिन मैंने ये एक अच्छा काम किया, अपनी मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद अब्बा का ID कार्ड, ये चीज़ें मैं साथ लेकर आ गई। मुझे लगता था कि मैंने आगे जाकर पढ़ना होगा। जब मैं कराची में आई, मैं कैंट स्टेशन पर उतरी, वहाँ से पैदल पैदल पटड़ियाँ हैं सिटी स्टेशन की तरफ आती हैं, रास्ते में कच्ची आबादी है, हिजरत कॉलोनी, वहाँ पर मुझे ट्रांस मिल गई। मैं उनके साथ रहने लग गई। जब मैं उनके पास रुकी तो उन्होंने बोला हमारे पास सिर्फ नाच गाना या भीख मांगना है। नाच गाना मुझे आता नहीं था, भीख मैंने ज़िंदगी में कभी मांगी नहीं थी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, समझाया, यही तुम्हारा फ्यूचर है, सारी ज़िंदगी हम यही करते आए हैं और हमारी पता नहीं कितनी सदियां गुजर गई, हमारा नाच गाना और भीख मांगना है। मैंने समझा चलो अल्लाह की रज़ा है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने भीख मांगना शुरू कर दी। भीख मांगने के लिए भी बहुत टफ़ काम है, किसी के आगे हाथ करना इतना ईजी नहीं है। भीख मांगने के लिए भी मुझे क्लैपिंग करनी नहीं आती थी, चलना नहीं आता था, मेकअप करना नहीं आता था, भीख मांगनी नहीं आती थी। मुझे 6 मंथ लग गए और मेरे ऊपर कर्जा चढ़ता गया। क्यों? घर का रेंट, खाना पीना, ये चीज़ें मुझे दुश्वार हुई। जब मैं ट्रेंड हो गई तो मुझे उन्होंने 3 तलवार सिग्नल पर हलाल अहमर के सामने खड़ा कर दिया। मैंने वहाँ पर 2 साल भीख मांगी। मैंने सोचा मेरी डिग्निटी नहीं है, मेरी इज़्ज़त दाव पे लग जाएगी, मेरा फ्यूचर नहीं है। अल्लाह ने मुझे हाथ पाँव दिए, अक्ल दी, मैंने मैट्रिक 1st डिवीज़न में किया हुआ है, क्यों ना मैं अपनी तालीम को दोबारा से शुरू करूं। तो मैंने अपने गुरु से बात की, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सारे हंसे, पैसे वेस्ट करोगी, क्या करोगी पढ़ के, ये पैसे सेव करो, कल को तुम्हारे बुढ़ापे में काम आ जाएंगे। हमारा कोई नहीं है सोसाइटी में, ना तो तुम्हें कोई कॉलेज एडमिशन देगा और ना तुम्हें कोई पढ़ाएगा। तो मैंने प्राइवेट इंटर किया। इंटर करने के बाद मैं कराची यूनिवर्सिटी चली गई। सुबह में मैं भीख मांगती थी, सुबह 8 बजे मैं सिग्नल पर चली जाती थी, 1 बजे तक मैं वहाँ बैगिंग करती थी। उसके बाद मैं घर पर आकर तैयार होकर
मैं यूनिवर्सिटी चली जाती थी। ऐसे करके मैंने IR में मास्टर किया। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैंने मास्टर कर लिया, मुझे कोई जॉब कुछ भी नहीं मिला। फिर मुझे मायूस होकर फिर दोबारा से फिर रोडों पर भीख मांगना पड़ी। तो मेरे साथ वाले लोग बहुत ज़्यादा हंसते थे और मुझे रोना आता था खुद पर कि देखो कि एक इंसान जो मास्टर कर ले फिर भी वो सिग्नल्स पर जाकर भीख मांगे, उसके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये मैंने फेस किया है। तो उसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन के पास से गुजरती थी, हम लोग डरते थे। क्यों? हम लोग भीख मांगते थे, पुलिस वालों का रवैया अच्छा नहीं होता था, हमें आते जाते रोकना टोकना। बाद दफ़ा ऐसा होता था मेरे ही पर्स से मेरे पैसे चुरा लेते थे, ऐसे हमें जानबूझकर खड़ा कर देना। तो मैं पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा डरती थी। इसी दौरान क्या हुआ, मुझे कोई मेरे सीनियर जो वकील हैं उन्होंने मुझे कहा कि तुम लॉ की तरफ आ जाओ। मैंने उनको रीज़न्स बताए, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमें कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमारे साथ अच्छे तरीके से बात नहीं की जाती। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुम ऐसा करो, तुम सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा लो। मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज की फ़ीसें जमा कर सकूं, बुक्स लूं, फिर स्टडी करूं, और लॉ को तो मैं वैसे पसंद नहीं करती। मेरे माइंड में एक अल्लाह की तरफ से था कि जो भीख मांगता है इंसान वो बहुत बड़ा गुनाह है, रोज़ क़यामत के दिन उसके चेहरे पर मांस नहीं होगा। और मैंने बोला अगर मैं वकील बन जाऊंगी तो मैंने सारी ज़िंदगी भीख मांग के गुनाह लिया है और आगे मैं झूठ बोलकर गुनाह लूँगी, मेरी तो सारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। फिर मेरे टीचर ने कहा कि लोग अच्छे भी होते हैं, जो वकील अच्छे होते हैं वो लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, अच्छे तरीके से उनके केस करते हैं, फ्री करते हैं। तुम खिदमत करना अपनी भी और अपनी कम्युनिटी की भी। तो मैंने उनके कहने पे सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। तो एडमिशन करवाने के बाद पहला साल जब मेरा स्टार्ट हुआ तो फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ कि कोई सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में ख्वाजा सरा पढ़ने के लिए जाता है। लोग मुझे देख के हंसते थे, मुझे ऐसे फील होता था शायद मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है या मैं लोगों से बहुत डिफरेंट लगती हूँ। ऐसे मुझे फ़र्स्ट ईयर में फ़ील हुआ कि जैसे मैं चिड़ियाघर से कोई जानवर आ जाता है स्टूडेंट्स में। तो पहले तो मेरे लिए यही डिसाइड करना बहुत डिफरेंट हो गया, मैं मेल साइड यूज़ करूं या फीमेल। तो मैंने यही सोचा कि मैं सबसे पीछे जो लास्ट चेयर होगी मैं उस पर बैठूं, अपनी तालीम लूं, और मैं लेक्चर लेके रोज़ चली जाती थी। 1 साल के बाद जब मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, मैं फ़र्स्ट ईयर में सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में हर बच्चे की सैफली आ जाती है, पास नहीं करते, लेकिन मैं फ़र्स्ट ईयर में ईज़िली पास होगी। तो फिर वहाँ के टीचर्स को ये हुआ कि ये पढ़ना चाहती है, फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इस तरह करके मैंने फिर वहाँ से फाइनल ईयर क्लियर करके मुझे डिग्री मिली। निशा, मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन इससे पहले आज शायद हम सब के लिए हैरत की बात हो कि कोई ख्वाजा सरा वकील हमारे सामने है, लेकिन जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप देखते हैं या तारीख़ के हवाले देखते हैं तो ये जो टर्म है ख्वाजा सरा मुग़ल दौर में सबसे पहले इस्तेमाल की जाने लगी। उस वक्त जो है वो इन कोर्ट्स का जो है वो सिस्टम मौजूद था। एम्परर के एडवाइज़र्स थे, बाकायदा आर्मी पर्सनल्स थे, उसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में जो है उन्हें तैनात किया जाता था, और ये पूरे मुग़ल एरा के दौरान। एक जो वहाँ पर चीज़ थी कि सोशल स्टेटस के ऊपर डिवीज़न थी। वो लोग जो सोशली इंडिपेंडेंट थे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उस वक्त की, जो माली हालात जिनके बेहतर थे वो शायद एम्परर्स और इनके एडवाइज़र्स हुआ करते थे, और रेस्ट बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आज हम देखते हैं कि नाचने के हवाले से और इस हवाले से उस वक्त हुआ करता था। तो ये हैरत की बात शायद आज हमें महसूस हो रही हो, लेकिन तारीख़ में ऐसी बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं। निशा, मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। आपने SM लॉ कॉलेज का तज़किरा किया अभी कि आपने वहाँ पर तालीम हासिल की और अपना LLB मुकम्मल किया, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है ये उन तमाम पॉलिसी मेकर्स के लिए भी कि क्या आपके एक्सपीरियंस पे बेस करके हम एक ऐसा इंक्लूसिव मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो तजुर्बा है SM लॉ कॉलेज के अंदर, क्या आपको वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया या माशरे की तरह वैसी ही सूरत हाल थी? अगर तो एक्सेप्टेंस है, इट मीन्स कि कोई ऐसा मॉडल क्रिएट किया जा सकता है जहाँ हम एक इंक्लूजन जो है या इंक्लूसिविटी को इंश्योर कर सकें। तो वो कैसा तजुर्बा था SM लॉ कॉलेज का? देखिए, फ़र्स्ट ईयर में तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर सही नहीं था, और सेकंड ईयर में जब मैं गई कुछ मेरे दोस्त लड़के और लड़कियां बने थे, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि
स्टूडेंट्स मुझसे बात करने में हिचकिचाते थे, कॉल्स पर मेरे साथ बात करते थे, लेकिन क्लास में मेरे साथ सिर्फ लड़कियां बात करती थी, लड़के मेरे साथ बात नहीं करते थे। मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई, बल्कि आज तो मैं एक प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ब्लैक कोट पहनकर सिटी कोर्ट जाती हूँ, अपनी कम्युनिटी में बैठती हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया हमारे लिए एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हमारे लिए क्यों इसी तरह हमें नहीं समझा जाता जैसे एक लड़के को और एक लड़की को समझा जाए। मैं कहती हूँ कि सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आई। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वैसे ये। निशा, दुनिया भर आप खुद एक एनजीओ रन कर रही हैं। दुनिया भर में जो टॉप थिंक टैंक्स हैं, अगर मैं चंद नाम ही यहाँ पर ले लूँ, FNF देख लें, USAID देख लें, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNDP है इवन, या जो यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, एक पूरी ग्लोबल तहरीक हमें नज़र आती है जेंडर इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर कि, और मैं शायद ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये महज जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं हो रही होती, बल्कि जब आप ग्लोबल तहरीक को देख रहे होते हैं तो ये यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी की बात है। डिस्पाइट दैट कि हज़ारों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपने बजाते खुद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आउटरीच के तौर पर जो है वो रन किए हैं कराची शहर में। क्या वजूहात हैं कि इन हज़ारों प्रोजेक्ट्स के बावजूद हमें वो आउटकम्स नहीं मिल सके जो डिज़ायर्ड आउटकम्स थे? इवन जो बड़े बड़े इदारे हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी या कहीं और जो ग्लोबल हमारी और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी हमें वो नताइज नहीं मिल सके। तो आपके नज़दीक अगर हम पाकिस्तानी सिनेरियो को देखें तो क्या अहम वजूहात आप जो है वो लिस्ट डाउन कर सकती हैं कि ये वजूहात हैं, इस वजह से जो है वो हम शायद कोई ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे या हमें हमारे पास आउटकम्स नहीं आ रहे? सबसे पहले तो जो हमारी कम्युनिटी है, ट्रांस कम्युनिटी, इनके पास एजुकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इनका मसला एजुकेशन का है। सेकंड, इनको हम अगर मेन स्ट्रीम पर लेकर भी आएँ, ये नाच गाना और भीख मांगने से बाहर ही नहीं आते। और मैं ब्लेम क्या एनजीओ सेक्टर को या डिपार्टमेंट्स को नहीं करूँगी, कम्युनिटी को भी ब्लेम करूँगी। क्यों हमारे माइंडसेट जो बना दिए गए हैं, बस यहीं तक बना दिए गए हैं, या तो हम भीख मांगेंगे या नाच गाना करेंगे। देखें कि मैंने कराची के अंदर स्टिचिंग शॉप्स, एक मैंने ट्रेनिंग रूम बनाया है जहाँ पर ख्वाजा को हम ट्रेन कर रहे हैं स्टिचिंग के लिए, और नॉर्मल कम्युनिटी के लोग आते हैं, कपड़ा स्टिच करवाते हैं हमारे से। देखें कि हम वहाँ पर अभी चाह रहे हैं कि ट्रांस कम्युनिटी को हम एम्पावरमेंट की तरफ लेकर आएँ। और साथ साथ जैसा कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे किया है कि इसका ये होता है कि लोग ज़्यादातर एनजीओज़ जो हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं, हम लोगों को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे CM सिंध ने अनाउंसमेंट किया था कि ख्वाजा सराओं को 2% कोटा सिस्टम में जॉब्स दी जाएंगी। आज तक मुझे नहीं लगता कि कराची के अंदर एक भी ख्वाजा सराओं को जॉब मिली हो। जबकि देखें कि मैंने मास्टर किया हुआ है, मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB किया है, उसके बाद मेरी 2 इयर्स की प्रैक्टिस है सिटी कोर्ट से, लेकिन मुझे अभी तक गवर्नमेंट ने किसी जॉब या किसी फ़ंड के लिए, या बैतुल माल है या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या मिनिस्टर्स हैं, NGOs हैं, लोग मेरे साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं, 6 मंथ, 1 ईयर्स, 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद मुझे पूछते भी नहीं हैं। बस शुरू में पिक्चर्स लगा ली, मेरे कम्युनिटी में जाकर हाउ नाउ पूछ लिया, और जब उनका काम निकल जाता है उसके बाद मैं बदकिस्मती से कहती हूँ कि हमें एक दीवार के साथ लगा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा कराची के अंदर एक मसला ये होता है कि जब एक ख्वाजा सरा की डेथ हो जाती है, हमारे लिए ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्यों हमारे ज़्यादातर लोग इंटीरियर सिंध से या इंटीरियर साउथ पंजाब से हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो हमें उनकी डेड बॉडी पहुँचानी होती है। 15 अगस्त को मेरी एक फ्रेंड है, हिजरत कॉलोनी में रहती थी, उसकी उम्र 16 ईयर्स थी, उसकी डेथ होगी। छिपा जो गुरा कब्रिस्तान के पास उनका सर्द खाना है, उन्होंने हमारी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। वहाँ पर मैंने मसलन के शोर किया, मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद जाकर उन्होंने हमारी डेड बॉडी ले। यहाँ तक देखें कि हमारी कम्युनिटी के लिए इतना है, जिस हर सर्द खाने के अंदर एक मर्द, एक औरत, हर मज़हब से रिलेटेड लोगों की डेड बॉडियाँ रखी जाती हैं, एक ख्वाजा सरा की डेड बॉडी नहीं रखी जाती। मैं तो अगर बताऊंगी यहाँ पर इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है इतना टाइम ही नहीं होगा। बहुत सारे इवन केसेस हैं, आपने हवाला दिया। पेशावर में अलीशा का एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था जहां डॉक्टर्स ने केस लेने से इनकार कर दिया था। सियालकोट में आग लगा दी गई थी। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं निशा, क्योंकि
वक्त बहुत मुख्तसर है और जितनी गुफ्तगू हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। एक फ़ाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा कि अगर निशा राव को हम एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं फॉर इंस्टेंस, और निशा को कहते हैं कि आप जो है वो कोई ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई जो है वो इंक्लूसिविटी को इंश्योर करना चाहें, तो वो कौन सा मॉडल होगा, या आप कौन से इनिशिएटिव्स लेंगी ज़ाती तौर पर कि जो जिसके थ्रू जो है वो हम इंक्लूसिविटी इंश्योर कर सकें और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है आपकी उसको मेन स्ट्रीम कर सकें? बिल्कुल ब्रीफ प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो मैं यूथ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, स्टूडेंट्स की। अगर हम स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देंगे, इन्हें मौका देंगे आगे आने का, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। सेकंड, मैं एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। अगर मेरी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छे इकदाम किए जाएँ, इन्हें स्किल डेवलपमेंट्स की तरफ लेकर आया जाए, इन्हें एजुकेशन दी जाए, या इनके लिए स्मॉल बिजनेसेस हों, तो मैं चाहती हूँ कि फिर जाकर कुछ बेहतरी आ सकती है। थैंक यू निशा। और क्योंकि वुमेंस डे की मुनासबत से हमने यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम का इनेकाद किया है, एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि मैं जिसकी पढ़त भी करता हूँ उसका हक़ अदा होना चाहिए। मैं इस इदारे का सपूत हूँ, तो किसी न किसी तरीके से अपना हक़ ज़रूर अदा करना चाहूँगा। और इवन बहुत सारे जो यहाँ पर करीबी दोस्त हैं वो जानते हैं कि हम जिनको पढ़ते हैं उनका इजहार आगे पहुँचाकर अपना हक़ अदा करते हैं। तो बेशतर ऐसी फ़ीमेल स्टाफ और फीमेल फैकल्टी जो यहाँ पर हैं और जिनकी बेतहाशा काविशें हैं इस इदारे को सफ़े अव्वल में लाने के लिए, मैं चाहूँगा कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही सही, ताकि हम आने वाली जनरेशन्स के लिए जो है वो इस एक सिंगल तस्वीर को डॉक्यूमेंट कर सकें, उन आने वाली तमाम ख़वातीन को डॉक्यूमेंट कर सकें, उनके लिए डॉक्यूमेंट कर सकें ये तस्वीर कि हमारे पास जो है वो एक ऐसा इदारा मौजूद है। तो एक स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज़ उन तमाम ख़वातीन के लिए जिन्होंने यहाँ पे अपना किरदार अदा किया है किसी भी हवाले से। थैंक यू। और निशा अगेन थैंक यू सो मच। हम फिर कभी आपको यकीनन ज़हमत देंगे कि आप दोबारा इस इदारे में आएँ और जो है वो इन स्टूडेंट से एक फुल फ्लेज आपसे टॉक हो सके। आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। Individually, we are all responsible for our own thoughts and action all day, every day. We can all choose to challenge and call out gender bias inequality. We can choose to seek out and celebrate women's achievements collectively. We can all help create an inclusive world. From challenge comes change. So let's all choose to challenge. With this note, I would like to welcome the performance of our most awaited theatre play, Daag, produced by SMIU Art Society. Please give a big hand for them. जी, मैं आपको उनसे बात करके बता देती हूँ। इसका कौन था? वही बिल्किस खातून जो रोज अपने बेटे के रिश्ते के लिए इसरार करती रहती हैं। आज तो राहिला से भी कहलवा दिया कि महा के रिश्ते के लिए आना चाहती हैं। खातून मना क्यों नहीं कर देती हो? एक ही बार है। राहिम साहब, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे बाद महा का कोई नहीं है, और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि जल्दी उसे उसके घर का कर दूं। मैं तो ठीक रही हो, सोच तो मैं भी यही रहा था। जवाब भिजवा के बुलवा लिया है मैंने उन्हें चाय पे, मगर क्या? महा के इम्तिहान की जिद। इम्तिहान कुछ नहीं, बोलो बाबा ने मना किया है। जी। अच्छा, अभी उसको रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताना। लेकिन कहा ना आपसे, जैसा आपको बेहतर लगे। तो आज वेटेगा क्राउड मेरा ग्रूव बाजी, ये उठाओ। हाँ, ये ऐसे। अरे शकूर, ये क्या तुम अभी तक यही सफाई कर रहे हो? उठो दूसरी हाँ सफाई बाजी, करो। जा रहा हूँ, गुस्सा नहीं होते। ना हराम किया है। रुको महा, कहाँ जा रही हो तुम? हमें बताया था ना एडमिट कार्ड लेने जाए, इम्तिहान है। क्या इम्तिहान महा? और हमने कौन सा तुमसे नौकरियां करवानी है? रखो किताबें और चलो मेरे साथ। अभी बस थोड़ी देर की बात है, जाने दे। महा, तुम क्यों मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल रही हो? रखो किताबें और चलो मेरे साथ किचन में। प्लीज हमें जाने दे। आज मेहमान आने वाले हैं, रखो किताबें।
फिर से आ गया, क्या कर रहा? अरे क्या सारा सामान गंदा कर देते हैं ये लोग। ठक ठक। मैं क्या कर रहा होंगे? ठक ठक। जा रहा हूँ। हाँ खोल ही नहीं रही। अरे ओए मेरा झाड़ू है। ओए अल्लाह क्या जी साहब रिश्ते के लिए आए बेटा। इसका अच्छा हाँ बाजी तमीज ही नहीं है। बाजी कोई आए? अरे आ रही हूँ। हाँ है गुड्डू के अब्बा, वो सब तो ठीक है, मगर घर में इतनी जान नहीं है। फर्नीचर देखें, पुराने जमाने का लग रहा है। अरे नालायक बेटे के लिए सोफे देखने आई हो या लड़की? हाय जहेज का सोच रही हूँ, यही ना दे दे। ओफो खातून, दुनिया 360 के जाविये से जितना घूम ले, तुम्हारी सोचना W11 की ही रहेगी। बात तो करने दो। पता नहीं उन्हें तुम्हारा लाल पसंद आए भी या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं, चांद सा बेटा है मेरा। अजी चांद का तो पता नहीं, चांद में दाग जरूर है मियां। मेरा बेटा लाखों में एक है। बहू भी ऐसी लाऊंगी, दूध की रंगत जैसी। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, क्या हाल है? तशरीफ रखें। जी। आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं बस वो रिक्शे वाले 100 रुपए मांग रहे थे, 50 में छोड़ के आई हूँ मैं तो। इतने से रास्ते का तो वाह। हर जगह शुरू हो जाती हो बस तुम। चुप करो मैं जरा अपनी बेटी को बुलवा लेती हूँ। जी बहन बुलाए। वहाँ बेटा मेहमानों के लिए चाय लाओ। बर। छोटी रह गई है। बेटा इनकी बात का बुरा मत मानना तुम, ये ऐसी बोल देती हैं। बेटा वो सब तो ठीक है, आपने पढ़ा कितना है? जी मैं बैचलर्स की तैयारी कर रही हूँ। माशाल्लाह। बैचलर, ये कौन सी वाला का नाम है? कौन सी जमात में हो तुम? मेरे बेटे ने तो मैट्रिक किया हुआ है 1st डिवीजन से, माशाल्लाह। जी दरअसल मेरी बेटी 16वीं जमात के इम्तिहानात की तैयारी कर रही है। 16वीं जमात? बुरा मत मानिएगा भाई साहब, लेकिन इतना क्यों पढ़ा लिया? बच्चियों की तालीम तो घरेलू होती है, जो है अदब तहजीब नजरों के सामने। बाहर तो पढ़ाई बेहयाई है भाई, बेहयाई। आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठ। जिस अदब और तहजीब की आप बात कर रही हैं वो तो आपकी जुबान और सोच से नुमाया हो रही है। क्या भाई साहब बैठ जाए। सच कहूँ तो इनसे मिलकर मुझे मालूम हुआ कि एक औरत के लिए तालीम कितनी जरूरी है। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? हम लड़के वाले। अरे बेगम बैठ के बात कर लेकिन हमें किसी ऐसे घर में अपनी फूल सी बेटी का रिश्ता नहीं देना कि जिनकी सोच इतनी गिरी हुई हो। ये हमें नहीं करना यार रिश्ता जी। अरे चलो बेगम। रख दो उसको। अरे रख दो उसको। अरे बेगम महा आप जाएं, अपना एडमिट कार्ड लेकर आए। बबलू कहाँ रह गए बे? कब से खड़े हैं यार? अरे बन्ना तुम आ गए? अबे कब से खड़े हैं? जल्दी आ जाते हो तुम यार। गुड्डू भैया से मिलना। अस्सलाम वालेकुम गुड्डू भैया, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अरे भैया तो वो चमक रहे हो यार। हाँ भाई। मतलब बात को देती है ना तो चमकते तो अपन लोग हैं भैया, तभी तो अम्मा चांद कहती है। अरे भैया वो क्या बात कर दी भैया। अरे गुड्डू भैया वैसे बात बताओ, आपके रिश्ते की बात होने वाली थी, क्या हुआ उसका? देख भैया गुड्डू जो है ना ब्रेन है, वो तो है। रिश्ता जाएगा टक्कर के ओके वापस आएगा, मुझे पता है। भैया बाकी सब तो ठीक है। अरे भैया मैं क्या कह रही हूँ, भाभी पढ़ी लिखी लड़की है। अबे भैया तुम मत पढ़ो यार, ये पढ़ी लिखी लड़की। गुड्डू को हल्का ले रहा है क्या? अबे भूल गए तुम लोग, मैट्रिक किया था 1st डिवीजन से। अबे भैया सही है, ठीक है। एक मिनट कॉल आ रहा है। अबे बबलू इधर आओ। हाँ माँ। हाय गुड्डू, हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। अबे क्या हो गया अम्मा, फिर से बताओ। हाय वो बोनी, मेरे घबरू जवान, मेरे चांद से बेटे के आगे चाय कम पानी, मगर बस तेरी पसंद की खातिर उनके घर गई। बस यही तो कहा था, ज्यादा तालीम लड़कियों का मिजाज बिगाड़ देती है। हाय उसके बाप ने 100 लड़के वाले होने का भी लिहाज न रखा,
हाय मुन्ना, इतना जलील किया तेरी माँ को। हाय रोमट अम्मा रोमट, मैं देखता हूँ उसको। रोमट एक मिनट, कहाँ जा दूँ? घर छोड़ रहा हूँ मैं। अब होते कौन है मुझसे ये पूछने वाले? मेरे पापा ने आपके घर वालों को जवाब दे दिया है। आइंदा से मेरा इस तरह रास्ता मत रोकिएगा। देर हो रही है मुझे कॉलेज के लिए। कॉलेज? अबे ये तालीम ही ना जिसने इन चीजों को तेवर बिगाड़ दिए। अबे अच्छे से दिखाने लगाने जानता हूँ इन चीजों को मैं। अबे भैया देख लिया, पहले ही बोल रही था मैं नहीं पढ़ूँ ये पढ़ी लिखी लड़कियों के चक्कर। मिल गया सुकून, ठंडक पड़ गई तुमको। क्या बकल आ रही है मेरे को? बकल आ रही है भैया। बोले ठंडे हो जाओ भैया यार। अरे क्या ठंडे हो जाओ यार, क्या ठंडे हो जाओ? अरे मेरे को रिएक्ट कर दिए, मेरे को रिएक्ट कर दिए। इसी रोड पे बेटी का बदला नहीं लिया तो नाम भी गुड्डू नहीं है मेरा। अबे भैया बदला लेंगे तो मैं बताऊंगा। बदला लेंगे इससे। अरे मुन्ना तुम क्या बता रहे हो यार? एक मिनट ना, कोई इंसानियत से करने की जरूरत नहीं है। निकल अब तू यहाँ से। चल भाई अपन प्लान करते हैं अपने। अरे जाओ यहाँ से। अरे तुम्हारे माँ बाप ने मना कर दिया? मना किया ना आपको, बार-बार क्यों हो जाते हैं पीछे? मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, हाँ है कि ना है? ना है। मुझको फिर क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या हो गया बेटा, बताओ तो सही। आंटी उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया। अरे अल्लाह, क्या बोल रही है साहब? गुड्डू ने किया, उसकी हालत बहुत खराब है। कलेजा फट जाएगा मेरी बेटी। अब बैठो, अब नहीं मुझसे नहीं बैठा। है कहाँ वो? मंदराचू के अंदर उसकी ऑपरेशन हो रही है। जाने अंदर क्या हो रहा होगा? आप बैठे। नहीं मैं नहीं बैठ सकती। क्या हो गया मेरी बेटी? आंटी आप बैठ जाइए, प्लीज आप बैठ जाइए। नहीं बेटा। आप जाके पूछते ही क्यों नहीं है अंदर क्या हो रहा है ऐसा? मैं पूछता हूँ, आप बैठो, कुछ नहीं होगा। आंटी आप बैठो। नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे तो मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। आप जाके पूछे उनसे क्या कर रहे हैं ये लोग, इतनी देर हो गई है। आप बैठो, मैं पूछता हूँ। इसे हो क्या ये? डॉक्टर साहिबा मेरी बेटी ठीक तो है? इनको अब ले जा सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस और मेडिसिन दिए, लेकिन देखिए आप आप इनको फॉलो कीजिए। उसका चेहरा, लेकिन अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप उम्मीद मत छोड़िए। ये क्या कह रही हैं आप? पूरी बात तो बताइए। अरे सुनिए तो सही यार, मैं मेरी बेटी। आंटी मत रखिए आंटी, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। आंटी हौसला रखिए प्लीज, हौसला रखिए। ये दाग मेरे चेहरे पर नहीं, ये उस मुनाफिक मुआशरे पर है जो औरत हो के भी औरत जात को रंग वजन कद काट के बिना पर जांचते हैं।
ये उस माशरे पर जो माँ बाप की फूल सी भली बेटी को जहेज के बोझ तले दबा देते हैं, उस माशरे की जो औरत की कोख से जने जाने के बावजूद औरत जात को ही तबाह करना चाहते हैं, ये मेरी नहीं उस माशरे की हार है। Ladies and gentlemen, please welcome on stage the directors and producers of this theatre play. Rizwan Ahmed, Fakiha and Kamal. Good job, guys. Inviting Ma'am Miss Tara Uzra Dawood, Director, Pakistan Refinery Limited Directorate, PSO Founder, Educator Girl. Ma'am, please. I must say, I am just blown away by the incredible event that's been put together today, because it is probably one of the first times I have seen such true engagement on the part of both men and women in every sense of boys, girls, and every sense of the two genders and transgender coming together to celebrate and honor women while inspiring both genders to appreciate both genders. So can you give yourselves a round of applause for that? From the history that was shown here through a Q&A session, an interview that was really mind-blowing because it really represented that
Gender is not what defines us, it's who we are. And today I am in awe that this university, this eminent institution, has put together a true representation and understanding that it is who you are, and not just who you are by gender, but by your values, by who you are as a person. And that is what this day represents. So I'm truly, truly, I guess, just so impressed right now with all of you and what's been put together here today. The theme of this year is Choose to Challenge. And my talk is going to be very different than what you've heard so far, because while we've been seeing the challenges of being a woman and the women who stand up to those challenges, and then we saw a play that emanates further challenges, I want to talk about something a little bit different. And that's called Choose to Challenge Yourself. Because I believe that the men and women here, but I'm going to really be addressing the women in many ways, can challenge themselves to be the most incredible role models for everyone out there. And though the play was fantastic, if I was to be involved, there'd only be one change I would have made or suggested humbly, and that the girl who was left defeated at the end would go on to become Prime Minister of Pakistan. Because life is full of challenges, they're full of obstacles, they're full of difficulties, but it is what happens next. And I know I, for one, am eager to see what happens next to that girl and that story, is defined by you and your life and your choices and your resilience. And from what I've seen here today, this institution is doing an incredible job of building resilience. And please give yourselves a round. And it's resilience that'll make a person get through those ups and downs and excel, and make an institution like this, which is called, Islam right in the title. It's an institution that represents the best of the religion and the faith in the choices being made. And so I'm very, very impressed. So in the theme of Choose to Challenge, and I'm going to add yourself, because others have spoken about other elements of that, I think that I, for one, am incredibly blessed to be a woman. And I feel that the future is female. So I'm actually, please. And in many ways, the present is already becoming female. In fact, yesterday at one of the talks I gave, the question that was discussed is there's so many women rising to positions of power. How is that going to change the culture? How is that going to change the economy? How is that going to change society? And how is that going to change our world? And you know what the best answer for that is? We define that together. And you students here today are part of that decision. So in keeping that in mind, I was asked to share a few tips and ways in which I have found useful in my life journey. And so I'm sharing that with you now, and you can take any bits of it that you find useful, and any bits of it that you don't find agree with you, you can just throw right out, because this is done based on my life and my experience. But I found it very useful. So there's 10 tips I'm going to share right now. Excuse me. The first tip is be there for others on their timelines and not your own, because that is when you matter most, and that's when your need for you matters most. This is a really important life changer in my own life. That means when someone calls you for need, whether they want something to eat, whether they want help with their work, whether they need you to listen to their problem, or whether it was Anaria saying, I want you at this time and this is when I need you, not when you need to come. When you're there for someone, when they need you, that is when you're doing a service of God, and that's when it matters. The next day you may not be needed the same way. So although we're all busy and have incredible demands on our time, the moments when we give to others
at their times of need, actually help define who we are and define our own paths. So that's one thing I found very life-changing in my journey. The second is you are responsible for the energy around you, not those around you. And why this is critical is there's such an interesting event that's been designed today that's gone from a rhythm of history and video and documentary. It has Western video to Eastern and university video to a talk on what it means to be a gender and the rights of those that are being fought by eminent lawyers like Nisha Rao. And then it moved on to a play, which involves students. And the energy was quite somber. So now it's up to us to change that energy, right? Now it's up to cheer. So how many women here love being a woman? And how many men here love that women exist? So I think everyone in this room has something to cheer about when we celebrate women on International Women's Day. So cheer for that. And with that, we change the energy of what the mood is today, just like that. And it's our responsibility creatively and together to decide what our mood is going to be. And I choose as a woman not to be a victim. I choose to be a role model. I choose to be a survivor. And I choose to make my dreams come true. And that's what I wish for you. Now, number 3 tip I have is self-discipline. Everyone wants to become number 1. Everyone wants to become the top student, the star, the celebrity, or whatever your dream is. But it takes a lot of hard work. And not everyone is prepared for that hard work. So I'm just using this moment to remind you that if you're really going for gold, you have to work for that gold. I can bet you that that play had practice after practice after practice. There's no way they got the script this morning and said, we're going to wing it, right? There was hard work involved. And that hard work led to precision performance. And the way we received that play and performance was because of the hard work and discipline put into every element of it. And it looked effortless. It looked seamless. Even the timings were done like so quickly. But that's only because of the hard work both in the production and the practice. And so even if it looks easy, the things that look easiest in life are probably those that have had the hardest work behind the scenes. So that's what I wanted to share, and of course applaud those who have done that hard work. My 4th tip that I'm sharing with you today is that when you do what you love, you will never have to work a day in your life. And I think one of the greatest challenges men and women face, but in many ways more often women, is women often are people pleasers. And they look to what society wants to put them in a certain role, in a certain box. And so many people don't have the courage, and it takes a lot of courage to do what they really love. And yesterday I spoke at a university for female students, and there were girls who were coding. And some of them said the greatest challenge is their parents won't let them use that coding. And so the reality is that it is a reality. And it is a part of our culture, and it is a part of our families, and it is a part of how we have lived in the past, but we choose how to define that future. If we choose, just like we clapped and changed the energy from somberness to excitement and pride, we can choose surrounding, whether it's girls who code or girls who excel, from something to be feared, which is the old energy, to something to be revered, which I think should be the new, current and new energy. Would you agree with me in that? Yes. So, excellence should always be applauded, should always be encouraged, and should always be appreciated. Whoever is excellent, and I will tell you, if there is any cultural element or family element in your life that is holding you back, it is only based on fear. Because the minute you excel, the greatest pride will always be from those who love you.
My next tip is life has no limit. It's all in your heart and in your head. So when I said our cast moment ended somberly and I would have hoped she would become prime minister, there's absolutely no reason why anyone in this room, male or female, transgender, could not become prime minister. The world is yours, but who wants it? Who wants to become the doctor, the lawyer, the sportsman, whatever you want? Because I believe so strongly that when there's a dream put in your life, when God puts a dream there, that dream is waiting for you. And if anyone doubts that you can achieve your dream, it's because the dream is not in their mind, it's in yours. Because the dream is a gift to you. So you're the only one that knows your dreams. Next, I wanted to share that if someone in your life or something in your life, it could even be a certain program you're studying, it could be any element of your life, wishes to leave, I say let them go. Because if someone wants to leave, they will eventually, and then God will open the doors to what's meant to come. The more you look at those behind, those who are leaving behind or doors that have closed, the more you are delaying the beautiful future that exists and meant for you. And so if someone or something needs to leave your life, instead of fighting it, instead of begging for it to stay, instead of denying it, say shukrana. Say your thank you at that moment for the moments you had together. And that means maybe you did medical school for a few years and you've always thought or been pressured to become a doctor, but you really want to be an actress. I think half the school is going to end up becoming actors and actresses. Then do not worry that so many years were dedicated to something when you love something else more. Be grateful for those years and look forward to the privilege of doing what you love. I really want to remind each of us that we are enough. You are enough. God has created you in its entirety. You are whole and perfectly imperfect and enough. Not only are you enough the way you are, but very often as you will age, as you will grow, as life goes on, you will find that your weaknesses are the clues to your greatest strengths. And your weaknesses are often the clue to your destiny. Because when you realize what you're not, it's the best way to realize what you are. And so instead of fighting it, I think it's so exciting to learn and understand who you are. I mean, we had a story today, and there were stories of class 5 and 6 and realizations that took place. Imagine what time would have been lost if those realizations were denied for 10 years, you know? So the quicker you accept who you are and who you're not, the quicker the beautiful destiny is aligned for you. And so I also wanted to add that don't allow yourself, and I'm really speaking to the girls in the auditorium, the girls and women, to ever become the objects and subjects of others. Okay, this is really important. People are going to want to put you in boxes, but you're going to define yourself exactly how you choose to. This is really important, but it's also exciting. That means when you come in any space, you get to choose who you are and how you define yourself. So just like I came here, I may have read the program, the itinerary, but experiencing what took place redefined this university for me. And I'm quite sure some of you may have read my bio or seen on social media that I was speaking here, or Googled, which is what everyone does today. But once you meet me, see me, hear me, it's redefining for you who I am. And each of you has the privilege, the right, and the opportunity to not only define yourself on your own terms, but to redefine yourself whenever you want and whenever you're ready. Because you are meant to evolve, and the only certainty in this life is change. And remember, my ninth tip is,
Don't try to fit in so hard to fit in when you were born to stand out. And it's the, absolutely. And it's the uniqueness each of you have that makes you the most exciting to meet. If I gave the same talk as Nisha, I will tell you that you'd have been bored already, right? The fact that we're totally different in what we're speaking about, our approach, our life experiences, is what makes us interesting. And that the play was not on either of our topics. That's actually what made today more well-rounded, more interesting. So it's your uniqueness that's your strength. And finally, I wanted to share that whatever it is you want to do it. Okay? Don't hesitate. There's a reason you want to do it, so why talk yourself out of doing what you want? If you have a dream, just begin. Begin today, begin tomorrow, but begin. Okay? If once, right? So I wanted to end by sharing how we can help you, because one of the main reasons I was so honored, and I am very honored to be speaking to such an eminent group of people at this very, very famous institution, is to find ways that we and I can help you moving forward. So one is that at Ladies Fund, we have launched the Barak Center, which is Pakistan's first ever all-female incubation center. And so you may have heard of national incubation centers and so forth. Ours is completely for women, and it is a space to grow. In the West, when you have a startup that becomes $1 billion, it's called a unicorn. So instead of calling it an incubation center or a unicorn builder, we said, what does our religion and our culture have that represents that same growth? And of course, it is the Barak, that the Prophet, peace be upon him, had gone to heaven in. It is a beloved symbol, as well as it represents speed of light and good luck. So we have created the Barak Center in that honor, and the Barak is, of course, pink, and the slogan is "Watch Her Fly." And the purpose of this incubation center is to enable startups. So if anyone here wants to start a business or has started a business, you can come for your training and growth with the dream of becoming a Barak. We also call our female startups Baraks. We have also designed Educate a Girl, through our Educate a Girl initiative, e-coding, to help more and more girls code for the purpose of them being able to be employed in these skills. So if you know anyone interested, we are there to serve, and it is free. We have partnered with the State Bank of Pakistan to give loans, to facilitate loans up to 5 million rupees to any woman for her business. So and we have simplified the form to 5 easy questions. The business plan to 5 easy questions. Why? Because the world is not meant to be a bunch of paperwork that's intimidating. It's meant to be easy and effortless, but something you have to fill in, and we are there to help you through that process. We're next introducing a partnership for Sharia compliant and going to be doing this in Lahore, but about 10 days ago we nominated 20 women for this. So if any of you have a dream and it's funds you need, we have this partnership with the State Bank. We have a partnership with eFiler, so if anyone wants to register a business, we will help your business become a real entity. And finally, we also manage money and investments for anyone who wants their money to grow. So in these ways, if we can ever serve you, and if not, just have a fabulous day, but I wanted to share with you that at the core, there's always, always ways that we and others can help you. And if there's any other need you have to make your dreams come true, I know that this university will connect you to the right people for that dream or that need. So please believe in yourself, believe in your dreams, and ask for help to make them come true. Thank you very much.
Respected audience, this program would not have been possible without the support and guidance of our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Mujibuddin Neman Sarai. Sir, may I request you to please come on stage and share your words on this important day. Honorable guests, Tara Daud and Nisha Rao, deans, faculty, my lovely students, and wonderful women of the world and of SMIU. Thanks to Tara, in fact, Daud, to rescue me, and she came here and talked immediately after the drama, which I really, when I would have come, I would have never been able to speak. It was a wonderful performance. Theme of today's talk, let me start with Shah Abdul Latif Bhittai. We all know him, a poet at a glance. And when this poet, centuries ago, talked about his poetry, communicated the population of this province and around the world with his poetry, then he didn't do anything except that he communicated all that through women, through the heroines of his poetry, whether it's the Suni, Sasvi, Mumal, Marvi. And it was not just a romantic poetry. It is the poetry which has a, whenever you read, it has a different message. Message at the local level, message at the national level, message at the global level. And I think when Shah talks about the woman, nobody can stop anybody to talk on the woman and the rights of the woman. Coming to today's importance, I think one cannot ignore, when I was looking today towards the population of the world, and I just wondered to see that where women's population exists at Pakistan level and at global level. It was interesting to see, in fact, that it's almost equal. The ratio is almost one, almost, except in some few countries where you have a bit variation, but not far away. And then to realize that why this 50% of the world population has been not given such opportunities if we start from the history of the humankind. But yes, I was very happy to listen both our guests through their experiences by Nisha Rao and our Tara, that how they have achieved the goals. Particularly, I was very impressed with Nisha Rao. To be very honest, I understand the difficulties, the real-time problems one observe and one experience in these journeys when your own do not really care about you. So yes, we have to maintain the balance, we have to be at par with each other, and as well as trans too. I thought it is time that we know the world and we know the importance of the woman, and most of you have talked on it, and most of you have given some presentations and performances. I just wanted my youth who is sitting here to remind them, Pakistan is a wonderful country. Whether it is the resources, whether those are the resources as the physical resources and the human resources. And I wanted to share with you some names. Of course, I know you know them, but it is the day that I wanted myself to salute those women who have played a key role, very important, deciding role in the development of this country, in the development of this nation, in the development of ourselves.
Let me start with Fatma Jinnah. And how can we forget her? She is the sister of our alma mater, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Then we have a Begum Shaista Ikramullah, a prominent politician, the first lady who was elected as a member of the Constituent Assembly of the country. Begum Rana Liaquat Ali Khan, wife of our first Prime Minister, but she was the first and only so far a woman governor of this province. Mohtarama Shaheed Benazir Bhutto. First Prime Minister, woman Prime Minister of the country, first, in fact, Muslim woman as a leader of the country. And we know her services, and if I would have a time, I would have talked the whole session on that. But of course, we have to go along. Then Fahmida Mirza, first Speaker of the National Assembly of this beautiful country. Then Hina Rabbani Kar, Foreign Minister of the country. Malala Yousafzai, I think that everybody of us know. Sharmeen Ubaid, first Oscar Award achieved by any person, not a man or woman, any person from this country. Arfa Abdul Karim, youngest ever in the world. When she was 9 years old, she got this Microsoft certification. I mean, we shall be proud of her. Unfortunately, she has just left this world at a very early age. Who knows what she would have been? To be honest, we are unlucky that we lost this soul. And I hope that, and I believe that if she would have been around, she would have brought a lot of revolutions in a digitalization, and particularly in the present times of this COVID challenge. Samreen Khayal Beg, a first Pakistani lady who even climbed the Mount Everest with all 7 summits. Amazing, I mean, honestly. And then Mrs. Fahmida Qazi. She was a teacher at Army Public School, Peshawar. And she threw her in front of the boys and girls and said to the terrorists that talk to me, I am their mother, don't move to them. I mean, amazing. Mai Mukhtaram, a resilience. She showed us how to fight for your right, for your dignity, in fact. And so on. I think I just took some names when I was on my way to university, and I was thinking to salute women who have played. So these are just 12 or 13 maybe. But there are, and I think I was very impressed by Tara Dawood's speech, because she dissipated and she talked about the positives. And she was very much rightly pointed out that by the end of this drama performance, we should have shown that how one can recover and how one can reform. I hope that when we will present the next drama, we will make her Prime Minister. So thank you very much. This United Nations, we shall salute the United Nations. In fact, I was looking that there are around 250 days are being celebrated in a year. 250 days out of 365 days. But let me tell you, the Women Day is amongst the top 5 days which has a huge impact at the universe, which shows an impact not in a way that
we shall only be talking on the miseries. We shall only be talking on the hard days. But in a way that women of the world, women of the Pakistan, and women of this province have proved their worthiness and their merit. Don't go away, just look at the medical data, medical population of this country, and particularly Sindh province. You see, it used to be the time when we used to say quota for the women, a quota for the girls. And nowadays, there has been a Bilal Medical College for boys. So you see, you can imagine. So you have achieved, and I believe that the time will come that this number will be in the millions, and this country will prosper with your equal performance, with your equal contribution, and we will have all this gender equality, the way we are thinking, the way we dream. Thank you very much. I am very much thankful and very much proud, frankly, for all my students. I just coming here, I just viewed some paintings, and then a drama performance, and then a boy took an interview of Nisha Rao. It was looking like I'm watching some wonderful TV channel. So yes, our media students are doing a wonderful job, and I'm very much thankful and proud of my Directorate of Student Affairs, particularly the way they've been monitoring and the way they have been performing with these students is wonderful. Thank you very much. God bless you. We need more leaders like you to make gender equality achievable. दुनिया के लिए तोहफा नायाब है औरत, अफसाना है हस्ती दुनिया के लिए तोहफा नायाब है औरत, अफसाना बस्ती का हसी बाब है औरत, देखा तो जो आदम ने वही ख्वाब है औरत, बेमिसल है आईने आदाब है औरत, कायम इसी औरत से मोहब्बत की फ़िज़ा है, औरत की अता असल में एहसान खुदा है. I would like to mention here that to make this celebration more colorful, our community society and character building society have been working hard backstage too, whereby they organized a painting competition on a theme of Choose to Challenge. An all-girls cricket tournament was also organized by the sports section of DSA. We shall now be distributing the prize among the winners of these events. To distribute the prize, the winners of painting competition, I would like to invite on stage Honorable Vice Chancellor and our guest of honors, Ms. Tara Uzra Dawood and Ms. Nisha Rao. So let me make an announcement for the first prize winner for winning the painting competition goes to Ikra Sumro from BBA department. A big round of applause. The second prize of painting competition is awarded to Lareb Rahman from BBA department. I am glad to announce the winners of International Women's Day Interdepartmental Cricket Tournament. Under the captaincy of Habibun Nisa Imran, the runner-up team is from the Department of Business Administration. Please welcome the captain with the team. So now moving toward the winning team, and the winning trophy goes to the team from Department of Media Studies and Communication. Please welcome the captain, Ms. Tayyaba Mustafa. Now I would like to request our Honorable Vice Chancellor to please present the souvenirs to our guest of honor, Ms. Nisha Rao. And Ms. Tara Uzra Dawood. And Mr. Abdul Bari. The Student Council members shall now be presenting a souvenir to our chief guest, Honorable Vice Chancellor Dr. Mujibuddin Sehrai Memon, who gave us this platform to make this event memorable. So now with this, we would like to conclude our program of International Women's Day 2021. I would like to thank the IT and radio staff
For their support, the Department of Works and Services, Caretakers Section, Public Relation Office, our student volunteers for their tremendous supports, and all the audience present over here for joining us today. Thank you everyone. Have a good day.